हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज टू फाइंड पावर एंड एनर्जी। सो लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिक पावर। Electric power. It is the rate per unit time it is the rate per unit time at which electrical energy is transferred by an electrical circuit. Clear? It is the rate per unit time at which electrical energy transferred by an electrical circuit. Suppose it is a circuit. In this circuit, suppose it is a potential difference V, it is resistance, it is I. Clear? So its power P is equal to VI. It is first equation. P is equal to VI. Clear? Now using Ohm's law, we know that V is equal to IR. It is Ohm's law. Clear? It is power. Power P is equal to VI, voltage into current. Clear? So we know that Ohm's law, V is equal to IR. So at the place of V, we can put IR. Now putting V is equal to IR in equation first. So power P is equal to, at the place of V, we can write here IR. It means IR into I. So it will be I square R. It is second equation of power. Clear? It is first equation, it is second equation. Now for third equation, again we know that V is equal to IR, Ohm's law, and this Ohm's law we can also be write I is equal to V by R. Again putting I is equal to V by R in equation first. So it will be power is equal to V into, at the place of I, we can write here V by R. So it will be V square by R. So it is the equation of power. Three equation. Equation first, equation second, equation third. You can prove using Ohm's law. Clear? So let us take some example. Always remember the formula power in your mind. Clear? So we can take some example.
Find the power of a circuit which potential differences is 12 volt and its resistance are 3 ohm. So you have to find the formula. Which formula you have to use? We know that in this question potential difference, it means V is given and resistance is given. Resistance is not here, resistance is here and here. So here current is, but current is not given. Potential difference and resistance is given, so we'll be apply third formula. So its potential difference is 12 volt and resistance is 3 volt. So its power P is equal to V square by R. V square by R. It means at the place of V we can write 12 square and resistance is 3 ohm. It means 12 into 12 by 3. 3 4 is 12. It means 48. And the unit of power is watt. It is watt. It's your answer. Clear? Can you find? So we can take another example. Suppose it is a circuit like this. Series or parallel combination, already I told you. It is a 12 volt. It is 2 ohm. 2 ohm. You have to find the power. Clear? Find power in the circuit. Its resistance, it is potential difference. So first will be calculate the total resistance. The circuit will be converted like this. Clear? It is in series. So 2 plus 2, it means 4 ohm and it is 12 volt. We know that it is a potential difference. It is resistance. So power P is equal to V square by R. Both are given. Current is not given. So we'll be use this formula. It is 12 into 12 upon total resistance is 4. 4 3 is 12. It means 12 into 3. 36 watt. Clear? Now third example. Suppose it is a circuit its potential difference is 15 volt and 5 ampere current is flowing and resistance is not given. Suppose it is R1, it is R2. You have to find the power. So power is equal to VI. First formula. Potential difference is given. It means 15 watt and current is 5 ampere. So 75 watt. It's your answer by using this
method you can find the power. So next topic. Next topic is energy consumed in electrical circuit. In electrical circuit, and energy consumed in electrical circuit. So let us see. Now see, suppose it is a circuit. Listen, it is a circuit. If in the circuit I ampere current flow and which potential difference is V. Suppose it is V, it is I ampere current flow. It is resistance. Suppose it is R1 and it is R2. Clear? So if I ampere current flow in the circuit, so there will be some energy will be produced inside the circuit, which we call heat energy. As we know, in the circuit, if I ampere current flow for time t, so energy consumed in the circuit E is equal to power into time. Clear? It is the formula of energy. Energy consumed in the circuit is equal to power into time. Suppose I ampere current flow in the circuit for time t. So energy is equal to power into time. Using this we can find three equations like this. First, energy is equal to energy consumed in the circuit. Energy consumed in the circuit is equal to power into time It is power. We know that P into T, it is E, energy consumed. So at the place of P in previous equation, we know that P is equal to VI, P is equal to, first will be put VI, VIT. It is energy consumed in the circuit in the form of heat. As we know that if we will be use electrical appliance, any electrical appliance, it will be generated. So electrical energy is converting in heat energy. So energy consumed in the circuit is equal to VIT. It means voltage, current, and how much time it will be take to flow the current in the circuit. It's a multiplication. Voltage, current, and time. It is the first equation. Energy consumed in the circuit. Clear? So it was the first equation, and second equation was Q is equal to Ohm's law, V is equal to IR. So I square R. It was the second equation of power. So in this equation, or this equation is equal to P T. In this equation, at the place of, not in this equation, equation first, at the place of V,
we can write here IR in equation first. We put Ohm's law V is equal to IR. IR at the place of V. So it will be energy consumed is equal to, at the place of V will be write IR. It means IR into I into T. So I square RT. It is energy consumed. It was the second equation. It is second equation. And for third equation again, in this equation will be put here I is equal to V by R using Ohm's law. So energy consumed E is equal to, at the place of I in this equation, at the place of I will we put V by R. So first V into, at the place of I we can write here V by R into T. So it will be V square by R to T. It is the equation. Third equation for energy calculation. First equation, second equation, third equation. Using this equation we can find the energy consumed in the electrical circuit, how much energy is consumed. Clear? So let us take some example. Find energy consumed in the following circuit. Okay, suppose it is a circuit. I ampere current, I is equal to, if in the circuit, if 10 ampere current flow for 10 seconds, which potential difference is 12 volt. Okay, so I ampere current is given, it is 10 ampere and it is 12 volt and time is given. So will be use this formula, energy consumed in the circuit will be V I T. Potential difference is 12 volt, current is 10 ampere, time is 10 seconds. So it will be 1200. We know that what is the formula of energy? 1200 joule. Clear? So you have to find the heat energy in the circuit using three formula. First, second and third. Now see, we can take some example. Next,
find heat energy in the following circuit. If 12 ampere current flow for 30 seconds, which potential difference is 24 watt. So using the formula we know that energy consumed is equal to V into I into T. It is given 24 volt. Current is also given 12 ampere current flow, and resistance is not given, so we can write here R1. At the place of R1 we do not write anything because it is not given. Using this formula, if suppose current is not given, this is given, so using second or third formula, using this you have to find the energy. So V is given, it is 24 into current is given, current is 12 ampere, and time is given, it is a 30. So energy is calculate is 24. So (8640) joule. Clear? By using three formula you have to calculate energy consumed in the circuit. Clear? Next topic is domestic energy consumption. Domestic energy consumption. CONSUM. Now see, हम जानते हैं बेटा कि हमारे घरों में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, हम यूज करते हैं, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है ना, और महीने के लास्ट में हमारा बिल आता है जिसे हमें पे करना पड़ता है ना, तो उसको हम निकालते हैं, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। उसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक, यानी घरेलू जो एनर्जी हमारा जितना खपत होता है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हमारा बिल कैसे आता है, उस बिल को निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है ना। तो अब हम इसको देखेंगे, इसका जो सिंपल फार्मूला है उसको कैसे करेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, ये फार्मूला इसको ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, वॉट into hours into day upon 1000। तो जब ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो ये किलो वाट आवर्स हो जाएगा, ये इसका फार्मूला है किलो वाट आवर्स का। इसको सिंपल तरीके से हम बता दे रहे हैं, ध्यान देना। किलो वाट आवर्स को हम कहते हैं और यूनिट,
जो घरों में हमारा बिल आता है उसको हम यूनिट भी कहते हैं। हमारी जो है कितनी यूनिट बिजली एक महीने में लगी उसको यूनिट कहा जाता है। ठीक, तो ये फार्मूला है। एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लाइक इन ए हाउस टू बल्ब of 80 watt is uses every day for 10 hours. Find energy consumed in 30 days. ध्यान से देखना बेटा, घर में 2 बल्ब है, कितने वाट का है? 80 वाट का है। कितना घंटा प्रतिदिन यूज किया जाता है? फॉर 10 आवर्स एवरी डे। ठीक है ना, तो एक महीने में कितना वो बल्ब एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो इसके लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम, हमारे डोमेस्टिक मतलब घरेलू जो एनर्जी कंज्यूम में कितना लगा, इज इक्वल टू वॉट। कितने वॉट का था? 80 वाट का था। लेकिन कितना बल्ब था ये भी याद रखेंगे। 2 बल्ब है ना, तो 2 बल्ब को पहले रखेंगे। 2 इंटू कितने घंटे चल रहा है? ठीक है, 2 बल्ब है, कितने वाट का है? 80 वाट का, इंटू कितने घंटे चल रहा है? 10 घंटे। 10 घंटे कितने दिन तक जलेगा पूछ रहा है? 30 डेज तक। विल बी राइट 30 अपॉन 1000। सो 10 10 10 10 10 10 कैंसिल। ठीक है, तो 16 क्या हो गया? किलो वाट आस आर यूनिट। हम इसको दोनों कह सकते हैं, ये भी है ये भी। इतने यूनिट्स जो है 16 यूनिट्स बिजली हमारी एक महीने में खपत होगी बल्ब के द्वारा, या 16 किलोवाट आवर्स। ये आंसर है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें बिल निकालेंगे हम, ये कितना बिल आता है। फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी if 4 bulb of 100 watt is used every day. Find the cost of electricity if 4 bulb of 100 watt is used every day. For 1 month. For every day. For 10 hours. Find the cost of electricity if 4 bulb of 100 watt is used every day for 10 hours. ठीक है, तो ये एक दिन का है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लो, ऑफ 1 मंथ कर लो, 1 मंथ। ठीक है, एक महीने का निकालना है। तो एनर्जी कंज्यूम फर्स्ट विल बी कैलकुलेट। एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू वॉट। फार्मूला क्या है? वॉट। और कितना था? वॉट के पहले कितने बल्ब थे? 4 बल्ब थे, तो 4 पहले लिखेंगे। उसके बाद वॉट, कितने वॉट के थे? 100 इंटू वॉट पर आवर्स, कितने घंटे चल रहे हैं? 10 आवर्स एवरी डे है। और कितने दिन तक का पूछ रहा है? एक महीने का। एक महीने का मतलब 30 डेज अपॉन 1000। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 कैंसिल। ठीक है, ये कितना हो गया? 40 इंटू 3 120। ये किलो वाट आस आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, इसमें कॉस्ट निकालना है, लेकिन कॉस्ट हमने दिया ही नहीं है, तो कॉस्ट नहीं। इफ यहाँ थोड़ा बड़ा, द कॉस्ट ऑफ
cost of 1 kilowatt hours is RS 10, ठीक है ना, यानी 1 किलोवाट आवर्स का जो है रेट 10 रुपीज है, तो इतने किलोवाट आवर्स का जो रेट होगा क्या होगा, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 120 इंटू 10, इट मीन्स 1200 रुपीज, इतना एक महीने का बिल आएगा। ठीक, सो we'll be take one more example. In this example will be take some equipments combined. और यही लास्ट है बेटा, इस पे पूरा चैप्टर कंप्लीट है। Now, question: find the cost of electricity at the rate RS 10 rupees per unit for 1 month if 2 bulb of 100 watt uses 10 hours every day. Next, 2 fan of 200 watt uses 5 hours every day. One refrigerator of 300 watt uses 10 hours every day. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट RS 10 रुपीज पर यूनिट फॉर 1 मंथ, एक महीने का पूरे का बिल निकालना है। इफ 2 बल्ब ऑफ 100 वाट, 2 बल्ब है उसको यूज किया जाता है 10 घंटे एवरी डे, 2 फैन है 200 वाट का फैन है और उसको 5 घंटे एवरी डे यूज किया जाता है, और एक रेफ्रिजरेटर है जो कितने वाट का है, 300 वाट का, इट इज 300 वाट का, उसको भी 10 घंटे एवरी डे यूज किया जाता है, तो एक महीने में कितना बिल आएगा और उसका कॉस्ट हमें कितना पे करना पड़ेगा वो निकालना। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला जानते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू वाट आवर्स डे अपॉन 1000, तो नंबर भी हम ये रखेंगे कितने नंबर हैं उसके, तो उसी फार्मूले का यूज करेंगे, पहले के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। पहला क्या था इसमें, इफ 2 बल्ब था, तो पहले के लिए नंबर ऑफ बल्ब 2 कितने वाट का है, 100 वाट का, इनटू कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे, कितने दिन के लिए पूछा गया, एक महीने के लिए 30, ये हो गया अपॉन 1000, ध्यान समझना। फिर उसके बाद प्लस, अब दूसरा 2 फैन है, अब 2 फैन के लिए भी यही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे इसमें, 2 फैन इनटू कितने वाट का, 200 वाट का, कितने घंटे चल रहा है, 5 घंटे, ठीक है, और कितने दिन के लिए पूछा जा रहा है, 30 डेज के लिए, इसके भी अपॉन 1000 प्लस
तीसरा क्या था, एक रेफ्रिजरेटर है, नंबर ऑफ वन कितने वाट का है, 300 वाट का, इनटू कितने घंटे यूज किया जा रहा है, 10 घंटे, अपॉन, क्लियर है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, सो इट विल बी 3 2 6, 3 2 6 and 1 0 60, प्लस इसको भी कैंसिल करो, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे कितना होगा, 2 2 4 5 20 20 इंटू 3, प्लस यहाँ भी कैंसिल करो, इट मीन्स 3. After calculating we find it is 60, it is 60, it is 3, 123 किलोवाट आवर यूनिट, ठीक है, दोनों हो सकता है किलोवाट आवर यूनिट। अब यहाँ पर इतना एक महीने का हमारा जो बिजली का खर्च था इतना आ गया, खर्च निकालना है, एक महीने में हमारा जो बिजली कंज्यूम्ड हुआ कितना हुआ, इतना किलोवाट आवर हुआ, तो इसका कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या है इसका, 10 रुपीज पर यूनिट है, सो 123 इंटू 10, इट मीन्स 1230, yes, it's once. Clear? We can take one more example. Now see. Find the cost of, question is find the cost of electricity find the cost of electricity for 1 month if 3 bulb of 100 watt uses 10 hours, not 10 hours, 20 hours, you put in 20 hours every day. One heater of 2000 watt uses 4 hours every day. Four fan of 200 hours uses 10 hours every day. One refrigerator of 300 hours, 300 watt uses 10 hours every day. Clear? So see the calculation. Energy consumed, total
energy consumed. Total energy consumed, we can write it TEC is equal to, it is 3 bulb, number of bulb 3, 100 watt, 100 watt uses for hours, it means 20 hours for 30 days, because it's asking 1 month. We know that in 1 month there are 30 days, plus we can write here 1000, plus for second, and second is 1 heater, number of heater is 1 and the watt of the heater is 2000 watt, and time is 4, it is for 30 days also, it's using 1000. Again it is 4 fan, number of fan 4 into watt, 200 watt, uses 10 hours for 30 days upon 1000, plus we can write here, one refrigerator of 300 watt uses 10 hours for 30 days. So calculate the total units, 10 10 10 10 10 10 10. So it will be 3 to the 6, 3 is the 80, 180, plus 30 30 will cancel, 4 3 is the 12, 120. It is 20 20 cancel, 10 10 cancel. So what is left? 4 into 2, 4 into 2 into 10 into 3, plus here 20 20 cancel, 10 10 cancel, 3 into 3 into 10, it means 3 3 is 9, 90. Calculate is 180 plus 120 plus 4 2 is 8, 3 is 240 plus 90. Calculate it. 180, 120, 240 and 90. 0, 2 is left, 4, 6, 3. It means 630. It's kilowatt hours. Clear? So cost of electricity for 1 month. Total cost of electricity is equal to, it is cost of electricity, रेट हमने दिया नहीं है, रेट नोट करो, एट द रेट RS 10 रुपीज. क्लियर? इसका रेट 10 रुपीज है, तो इतना किलोवाट आवर्स जो है एक महीने में कंज्यूम हुआ है. सो इट इज 630 इंटू 10, 6300. Which answer? It's your answer. Using this formula, you can find electric bill at your home. Clear? So, I'll be completed my chapter. Now your chapter 1 electricity is completed. Okay, beta. Thank you.